हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश बाल भारती 3.2 द काइट फेस्टिवल इस लेसन के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर लेकर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बिलो चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन। तो यहाँ पे कौन से वर्ड के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है ये हमें राइट डाउन करने हैं। सो देखो, फर्स्ट कॉलम जो है वर्ड्स का है। हैप्पीली का सिनोनिम्स है जॉयफुल और उसका एंटोनिम्स है सॉरोफुल। Traditional, old-fashioned, modern, had, pause and start, true, victory and defeat, exotic, foreign and native, rival, competitor and partner, soar, rise and drop, brilliance, luster and dullness. Say whether the following statements are true or false. देखो, फायर ग्लास काइट लीड टू क्रिएटिंग पावर ड्रिवेन एरोप्लेन्स। आंसर फॉल्स। सेकेंड है, इन गुजरात द काइट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग। आंसर ट्रू। उत्तरायण स्टार्ट्स फ्रॉम मकर संक्रांति ऑनवर्ड्स। आंसर ट्रू। D question, kite flying in Gujarat is a competitive sport cum festival. Answer true. The Kite Bazaar in Ahmedabad is open day and night for a week. Answer true. F question, the special thread for kite flying is sharp by adding sugar and glass pieces. Answer false. Question 3. Using point from the lesson, give the detail of the following in a short paragraph for each topic. इस टॉपिक के बारे में शॉर्ट पैराग्राफ राइट करने हैं। पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स। इन द पास्ट द ओनली काइट अवेलेबल वेर काइट मेड ऑफ काइट पेपर एंड थिन वुडन फ्रेम्स। टुडे देयर आर Motorized kites and even fireglass kites. The box kite are flow at night. These are illuminated kites strung on one line and launched into the sky. These kites are called tukals. They complete with the brilliance of the stars. B question, International Kite Festival at Ahmedabad. Answer. The International Kite Festival at Ahmedabad is organized by the Gujarat State Tourism Corporation. It is held at the Sardar Patel Stadium or at the Police Stadium. This festival attracts international kite flyers who demonstrate their skills in flying exotic kite. It also attracts local champions at this festival. Little Indian paper kites compete with kites from Japan, USA, UK and other countries. Spectators are excited to watch the marvelous shapes of eagles and snakes soaring into the skies. सी है द काइट बाजार ऑफ अहमदाबाद। इसके अबाउट शॉर्ट लिखना है। द काइट बाजार और पतंग बाजार is in the heart of Ahmedabad. It is open 24 hours a day for a whole week. The bazaar has crowd of people buying their stocks and hanging through the night. A visit to this bazaar is not to prove that the entire city is obsessed with kites. Question 4. You have just returned after your first experience of the kite festival in Gujarat, Ahmedabad. You were thrilled with the festival. Write a short report about the kite festival for your local newspaper. Give an attractive headline, the dateline, and an account of the kite festival. Write the report in the third person with more use of passive voice. तो आंसर है यहाँ पे, राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, यू हैव अ फ्रेंड हु लिव्स अब्रॉड. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइबिंग हाउ यू एंजॉय द काइट फेस्टिवल. फ्रेंड्स को लेटर राइट करके आप काइट फेस्टिवल कैसे एंजॉय कर रहे हो बताना है.
सो ये रहा लेटर। क्वेश्चन 5. Verb forms show both tense, present, past and futures and aspect progressive, perfect, perfect progressive। ये ग्रामर का पार्ट है। ओके। तो ये है आंसर। क्वेश्चन बी, अंडरलाइन द वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट देयर टेंस एंड एस्पेक्ट। वर्ब को अंडरलाइन करके वो कौन सा टाइप का टेंस है हमें स्टेट करना है। फर्स्ट आंसर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। पीपल वेर हैगलिंग्स ओवर द प्राइस ऑफ काइट्स। आंसर पास्ट प्रोग्रेसिव। वेंडर्स हैड बीन सेलिंग काइट और थ्रू द वीक। आंसर है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन 4. स्किल क्राफ्टमैन हैड डेमोन्स्ट्रेटेड एज ओल्ड स्किल्स। आंसर है पास्ट परफेक्ट। स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन विल बी ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। आंसर है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। Kite flyers demonstrated their skills with exotic kites। आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट। Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Like करो, comment करो and share करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।